negative terminal of V2 that will act as minus VEE. Okay. Now the only thing you have to think here or you have to take care of is that you have to change the voltage. You have 5 volts here. We can keep it 10 volts. So the biasing voltage is 10 and you have plus 10 here. Okay. So minus VE is equal to minus 10 and plus VCC is equal to plus 10. Okay, all right. Now see if I connect inverting terminal, inverting terminal directly to ground, that means here this operational amplifier, it is in open loop configuration. It is in open loop configuration. In open loop configuration, the gain is very high. Okay, the gain is very high. So the output will be measured from this terminal. Output यहाँ होगा. We can connect a probe also, voltage probe, that is somewhere here at the output, and we can connect input source. So say for example a sinusoidal input is connected here. If I connect it to operational amplifier, what will be circuit known as now? इसका नाम क्या होगा? कौन सा circuit होगा? Patik, which circuit it will be? फातिक, पता नहीं, आपको नहीं पता? याद ही नहीं है? ओपन लूप में कौन सा सर्किट पढ़ा है हमने? You don't remember? What about Asif? Sir, non-inverting. नॉन इन्वर्टिंग तो है ये, मगर ये सर्किट कौन सा बनेगा? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर? No, sir, yes, sir, biasing, because V reference is 0, yes, sir. V reference is 0, so it will be purely zero crossing detector. Okay, zero crossing detector ही बनेगा. So suppose we have now. सर इस वाले का आउटपुट हम कहाँ से लेंगे? आउटपुट है ना नोड 3 पे. ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए. Why will be output connected to ground? Ground और नोड 3 के दरमियान होगा आउटपुट, क्योंकि हमारे पास प्रोब यहाँ सिंगल टर्मिनल है, तो इसलिए एक ही वायर यहाँ होती है. ठीक है, यहाँ एक ही वायर है. जस्ट अ सेकंड, आई विल चेक इफ आई हैव डिफरेंट प्रोब्स. नहीं, यहाँ पे एक ही प्रोब है, तो आउटपुट तो यहाँ से होगा ना कलेक्ट फ्रॉम दिस नोड. दिस इज द आउटपुट नोड ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दैट? नहीं सर. What is the confusion, Fatik? What is the confusion you have? तो कुछ नहीं, मुझे लगा हम थर्ड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे. नहीं, जाके आउटपुट मिलेगा. आउटपुट जब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा तब नोड नंबर 3 पे तो what will be the voltage? It will be 0 because it is connected to ground. Then there will be no output. तब तो आउटपुट नहीं होगा. अच्छा ठीक है. तब तो आउटपुट बिल्कुल भी नहीं होगा. तो in that case it will not be true. वो तो सही बात नहीं है. Now see if we will check the input also. अगर इसका इनपुट भी देखा जाए तो इसका इनपुट यहाँ है somewhere. ठीक है, इनपुट यहाँ है. And if we simulate it, as I said that it is a zero crossing detector because reference voltage is 0, then in that case it should resemble a zero crossing detector. Okay. In zero crossing detector, let me change the time per division knob. Yes, this looks like a zero crossing detector. Okay. अब देखो ये एक zero crossing detector circuit ही बनेगा. It is a quite smooth zero crossing detector. So there is a transition in the output at 0. Why? Because reference voltage is 0. And as said by Asif, as correctly said by Asif, that it is non-inverting type. Non-inverting का मतलब है the input is applied at non-inverting terminal. अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? The phase difference between input and output is 0. जब इनपुट का पॉजिटिव पीक होगा तभी आउटपुट का भी पॉजिटिव हाफ होगा. When you have negative half of the input, you will also have positive half of the input. And please note what is plus VCC. इसमें जो हमारे सर्किट में है plus VCC is 10 volts. Okay.
V1 is nothing but it is plus VCC. Okay, it is plus VCC. Can I change the name? Plus VCC. Okay, it is plus VCC. Okay, what is V2? V2 is nothing but it is minus VEE. It is minus VEE. Okay, so this one is minus VEE and plus VCC. If you note down that what is plus VCC? Plus VCC is equal to 10 volts. And what is minus VE equal to? Minus 10 volt. That is why the output will be saturated to plus 10 volt and minus 10 volt. ठीक है, ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है. अगर आप इसको वोल्टेज रेफरेंस सर्किट बनाओगे या वोल्टेज कंपैरेटर, इन दैट केस रेफरेंस वोल्टेज विल बी समथिंग. ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज होगी कुछ. तो इन दैट केस योर इज इट फाइन. यहाँ पे किसी को सवाल तो नहीं है? कोई बच्चा है ऐसा जिसको सवाल है? बिलाल अहमद. यस सर. ओके बिलाल बेटा, कोई सवाल तो नहीं है? नो सर. एहतराम अहमद भट्ट. यस सर. यस सर. ओके एहतराम, समझ में आया बेटा ये? यस सर. यस हेलो सर. हाँ बताइए. सर अगर हम 3 टर्मिनल वाला लेंगे ना, हाँ, तो उसमें आउटपुट बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब VCC और VE. 3 टर्मिनल में फर्क सिर्फ इतना है. आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन नाउ. सी इन 3 टर्मिनल डिवाइस उसमें प्लस VCC और माइनस VE नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली आता है इन सिमुलेटर. वो इस जो ये टूल है इसमें इन्होंने वो प्रोविजन रखा है कि एक डिवाइस ऐसी है जिसमें आपको प्लस VCC नहीं देना है और माइनस VE नहीं देना है. ये जो सिमुलेटर है या जो ये मल्टीसिम टूल है, ये बाय डिफॉल्ट उसको खुद ही समझता है कि इसमें प्लस VCC कनेक्टेड है और माइनस VE भी कनेक्टेड है. ठीक है, वो ये खुद ही इसमें एज्यूम कर लेता है दैट समथिंग इज देयर. इज इट फाइन? जी जी. हाँ, तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीजें देनी पड़ती है. दैट इज व्हाई आई चोज अ 5 टर्मिनल डिवाइस. आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू यूज 5 टर्मिनल डिवाइस. 3 टर्मिनल डिवाइस तो जैसे हमें खुद बनाना पड़ता है इसमें ड्यूअल पावर सप्लाई. जैसे हमें लैब में खुद बनाना पड़ेगा, उस वक्त आपको 5 टर्मिनल डिवाइस होगी. इनफैक्ट उसमें 8 टर्मिनल्स होंगी, लेकिन कुछ टर्मिनल्स नॉट कनेक्टेड हैं. जैसे पिन नंबर 8, पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 1 दे आर नॉट कनेक्टेड. रेस्ट 5 टर्मिनल्स दे आर टू बी कनेक्टेड. उनका मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है. वो मैंने पहले जो एक वो बनाई थी ड्राइंग. ठीक है, शुड आई शेयर दैट ड्राइंग वंस मोर? नो सर, नो सर. ओके, ठीक है. तो अगर अब हमें वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज कंपैरेटर बनाना है, क्योंकि जैसे आसिफ ने कहा यहाँ पे वो भी रेफरेंस वोल्टेज इज इक्वल टू 0. reference voltage is equal to 0. In that case, we have to connect a reference voltage. Okay. In that case, we have to connect a reference voltage. So how much is that reference voltage? V reference. तो हम यहाँ लगाएंगे कहीं. ठीक है, instead of this ground. So it will be connected here. Suppose now my reference voltage, it is equal to my reference voltage is, it should be always lesser than input voltage. My input voltage is 4 volts. ठीक है, input voltage जो मेरी है 4 volt. तो reference voltage उससे कम ही होनी चाहिए. So suppose my reference voltage is not 4 volts, it is 3 volts. Okay, 3 volt. So now I should be able to obtain a transition at 3 volts. I should be able to obtain a transition in 3 volts. Okay, let us simulate this and try to observe what is the output now. You can see from the output there is a transition which surely does not happen at 0. So this is a 0 point. Okay, ये जो है ये axis, this is 0 axis. But transition does not happen at 0. It happens somewhere at 3 point something, 3 volts. Okay, this is 3 volts. यहाँ 3.1 volts है, इसके नीचे इसके अराउंड ही है, तो 3 volts पे ही होती है.
तो जब जब इनपुट आपका इंक्रीज होता है 2.5, 1.9, 2.5, 2.9, 10, 3 तो ट्रांजिशन होती है, फिर 3.1, 2, 3, 4, 5 और 4 तक जाता है, देन फिर डिक्रीज होता है और यहाँ पे ट्रांजिशन होती है। तो ये वोल्टेज कंपैरेटर है। ठीक है, ये इज इट फाइन? कोई सवाल तो नहीं है? आसिफ, इज इट फाइन? Yes, sir. Okay, now see, the good thing about this is that we can change this reference voltage and we can observe that the transition point is also changing. Okay, transition point is also changing. Uh, just a second, auto. So we can see that the transition point is also changing. Okay, see, I am changing the reference voltage. You can see that transition point is also changing. See, you have a narrow output now, narrow pulses. That means the transition happens very quickly. ठीक है, ऑन जो प्लस वी सैचुरेशन में जब ये जाता है वीसीसी की सैचुरेशन में, दैट रीजन इज वेरी स्मॉल. यू कैन चेंज इट एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं वोल्टेज रेफरेंस. So this was all about voltage comparator circuit. I'll quickly go through negative feedback now. Okay, let us now connect a negative feedback. So this will be now connected to 0. We want to make a negative feedback circuit. For making a negative feedback, we require a feedback resistor. We require a feedback resistor. So this resistor is R of F. Okay. Say for example, R of F, it is equal to uh, 1 K. Okay, let me draw it here. It is equal to 1 K. So feedback resistor is always between output and one of the inputs. Okay, one of the inputs. अब देखिए, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक डालना है, it should be between this terminal and this terminal. Okay, so I'll remove the ground from here. तो अब ये है नेगेटिव फीडबैक. Okay, अब ये है नेगेटिव फीडबैक. And if I will delete it here, if I will connect non-inverting terminal to ground like this, non-inverting terminal is connected to ground, and you have another resistor between inverting terminal and input. What kind of amplifier is this? Jannat hai yahan pe, Jannat Sultan. Yes, sir. What is this amplifier known as? सर तो नेगेटिव फीडबैक में ना. हाँ, ये तो है नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव फीडबैक में ही है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर या इंस्ट्रूमेंटेशन, कौन सा कहेंगे? सर याद नहीं है. आगे दो पीछे छोड़. चलो ठीक है. सी आसिफ, कौन सा है ये बेटा? Inverting amplifier. Yes, it is inverting amplifier. And what is gain of inverting amplifier equal to? What is gain, or sorry, what is output of inverting amplifier equal to? V output is equal to minus RF divided by R1 into V input. यही है आसिफ? इज इट फाइन? Yes, sir. मंजीत, आपको याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ था. Yes, sir. Okay, so output is minus RF by R1 into V in. अपने सामने एक नोटबुक रखें और पेन भी रखें, आपको कुछ कैलकुलेट करना है. Now see, if this is your output equation and your input is 2.5 volts, 2.5 volts. What should be the output of this amplifier? Can you please tell me what should be the output now, given the RF is also given, RF1 or R1 is also given?
So this is R1. R1 भी दिया गया है और RF भी दिया गया है. Can you calculate the output? कोई बच्चा इसमें बता सकता है? Fatik, what is the output? जी सर, एक मिनट। जल्दी करो बेटा। अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया वो मैसेजेस में टाइप कर सकता है. आई कैन ऑब्जर्व योर मैसेज. 500. 500 क्या? 500 क्या? वोल्ट्स? Yes, sir. Okay, who is saying 500 volt? Manjeet? Ji, sir. 500. Okay, 500 is first suggestion. We have another suggestion 5 from Arib. So what is the next suggestion we will be having? V input, it is equal to 2.5 volts. Okay? V input is 2.5 volts. And RF, it is equal to 2K. And R1 is equal to 1K. What will be V output then? V output will be equal to minus 2K divided by 1K into 2.5. -5. It will be minus 5. Very good. So it will be minus 5 volts. Minus 5 volts. Okay. So Arib was close, but sign में गलती की उसने, but he was close. So minus 5 volt इसका होना चाहिए. Okay. So let us try to see what will be the output now. This is your input. Okay. This is your input. This is your input. And second thing that is important here is your output is minus times. Your output is minus times, means out of phase. Out of phase by 180 degree. So 180 degree out of phase hoga because it is minus times. Okay. So let us try to observe what is output. So this is inverting amplifier. Inverting amplifier. Okay. If you will see here, your blue one is input, green one is output. Blue one is input, green one is output. You can see first of all, the input and output, they are quite out of phase by 180 degree. Okay, you can very easily observe that. Why? Because when you have input, blue line, it has a negative half, लेकिन आपके output में positive half आ रहा है. So the phase difference between these two signals, it is 180 degree. The second thing that you have to see, input is 2.5 volt. Okay, you can see 2.49 something, but your output is 5 volts, 4.98. Okay, somewhere 5. So 5 volts है ये. And minus times 5 volt would mean out of phase by 180 degree. Okay, देखिए, I said in my previous lecture also, I said that your gain here, your gain of this circuit is equal to RF divided by R1. It is the gain. If you change RF or R1, the gain will also change. What is gain? Gain is the ability of an amplifier to amplify the input signal. Okay? So please closely observe this effect. If I change RF or even R1, the gain will change. Okay? See, the gain is changing. The gain is changing. I am increasing the resistance to somewhere around 4, then the gain is also changing. If I decrease it, the gain will also change. Okay, तो इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, the gain also changes accordingly when I change R1. Okay, R1, when I change R1. But the most important thing that you should note, since this circuit, it is having a supply VCC of 10 volts and VEE of minus VEE of minus 10 volt. देखिए इसमें जो बायसिंग सप्लाई है 10 volts, 10 volts से ज़्यादा इसमें एम्प्लीफिकेशन कभी नहीं होगी. See, please observe it very closely. I'm changing the RF. Okay, the gain is also increasing. The amplification is increasing. The signal is amplified more. As soon as it reaches to 10 volts, then there is a flattening. इसमें peak flattening होगी. What is the peak flattening? Peak flattening means saturation. So amplification is not possible beyond 10 volt. 10 volt, I have told you before also, amplification comes because of biasing supply.
जितनी बायसिंग होगी उतनी ही आपको एम्पलीफिकेशन होगी। तो आपको याद रखना है, अगर आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए V वोल्ट्स या X वोल्ट्स, आपकी बायसिंग उस सर्किट में कम से कम X वोल्ट होनी चाहिए। X वोल्ट से कम हो जाएगी आपकी, अगर बायसिंग सप्लाई उसमें X वोल्ट से कम होगी तो उतनी एम्पलीफिकेशन आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। So this circuit, no matter what is the input, it can at most amplify up to 10 volts. The maximum amplification of this circuit could be only 10 volts. Why? Because plus VCC is 10 volt and minus VE is 10 volt. Minus VE is 10 volt. I will ask my students now, they will help me to draw a non-inverting amplifier. Okay, non-inverting amplifier. So maybe I will ask someone. Basila is here. Basila. यस सर। बाजला बेटा आप बताओ कैसे बना, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। इफ समबडी वांट्स टू टेक a picture of it, you can take a picture. मुझे अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बेटा बनाना है विद नेगेटिव फीडबैक, तो कैसे मैंने क्या चेंजेस करनी है? बाजिला, बाजिला, कैन यू हियर मी? रोल नंबर 43। सर यस सर। जी बताओ बेटा, मुझे क्या चेंजेस करनी है? अब मुझे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, वेरी क्विकली। सर इनपुट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। इनपुट को क्या करेंगे? हाँ ठीक है, आपने सही बताया, बताओ, डोंट वरी। सर इनपुट को पॉजिटिव में करेंगे और ग्राउंड को नेगेटिव में सर। अच्छा, इनपुट को पॉजिटिव में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेइंग दैट हैव एन इनपुट, आई विल कनेक्ट। अच्छा, ग्राउंड भी लगाएंगे पॉजिटिव में कि नहीं लगाएंगे वो? सर ग्राउंड नेगेटिव में। अच्छा, ग्राउंड कहाँ पे अब लगाएंगे, ऐसे आप कह रहे हो? यस सर। अच्छा, ग्राउंड कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एट दिस पॉइंट या यहाँ पे? यू आर सर्चिंग नीचे, यहाँ ग्राउंड को हमेशा बेटे यहाँ पे लगाएंगे, ये ठीक है, इधर लगाना, ठीक है। Now see, we have made a smaller change here. It will make the amplifier as non-inverting. Non-inverting का मतलब है इनपुट आपको non-inverting टर्मिनल पे लगाया गया है। Okay? It also means that there will be no phase shift between input and output. और आपका जो ये है feedback that is connected to negative terminal. Okay, as you can see, I have kept resistor at the top. I can also keep the resistor at bottom. There is no problem in that. It is just a placement. It is just a placement. Now, can somebody help me in calculating its gain? What will be its gain? Maybe I will ask Amir Nazir Bhatt, roll number 24. Amir Nazir Bhatt. जी सर। बताओ बेटा, what will be output of this first output of this circuit? इसका आउटपुट क्या होगा? V output. Yes, do you know what is V output? मुर्तजा खुर्शीद, मुर्तजा आप बताओ। मुर्तजा खुर्शीद, what will be V output of this circuit? Non-inverting amplifier. Sir, 1 plus R2 by R1. हाँ, 1 plus R2 और RF by R1 Into V in. into V in. That is correct. ठीक है, ये सही है। So this will be the output and this much will be gain. This is gain, okay? This is gain. So if RF is equal to 2 kilo ohm, if RF is 2 kilo ohm, what will be the, and V input is 2.5 volts and R1 is 1 kilo ohm, इसका output कितना होगा? With these values, please check what are the values. What should be the output then?
You can check it from the circuit. What is the output then? 7.5. 7.5. Yes, sir. So it is 1 plus 2 is 3. 3 into V input is 2.5. That is 7.5. Okay. Let us see whether it is 7.5 or not. ठीक है, इसको देखते हैं क्या होगा. So let us simulate this one. If you simulate it, first of all, you will observe one thing, that there is no phase shift between input and output. ठीक है, आपका blue है input, आपका green है output. So पहली बात तो ये है, there is no phase shift. There is no phase shift. That is why it is known as non-inverting amplifier. Okay. अब दूसरी बात जो इसमें है, input है आपका 2.5 volt and your output is 7.5 volt as correctly calculated by one of the students. Okay. तो इसमें फेज शिफ्ट नहीं है और इसका जो इनपुट है वो एम्पलीफाइड है. आउटपुट इज एम्पलीफाइड देन इनपुट. एंड हाउ मच इज द एम्पलीफिकेशन? इट इज नियरली 3 टाइम्स. इसमें भी यही बात ट्रू है, एम्पलीफिकेशन, क्योंकि VCC इसमें 10 वोल्ट्स हैं और V माइनस V इज 10 माइनस 10 वोल्ट. इसमें भी यही बात ट्रू है कि एम्पलीफिकेशन 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगी. सी इफ आई विल चेंज इनपुट or even I will change the gain. Gain means changing RF और R1, दोनों में से कोई भी. तो अगर हम ये करेंगे तो आप देखोगे इसमें भी फ्लैटनिंग होगी, इसमें भी सैचुरेशन होगी. लेकिन हाँ, जब आप वैल्यू करोगे RF का चेंज एंड R1 का, तो आपको एम्पलीफिकेशन डिफरेंट होगी. तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, खासकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में. आप ह्यूमन स्काल्प से, स्किन से कोई फीबल EEG या ECG सिग्नल उठाना चाहते हो और वो बहुत कमज़ोर होती है, उसकी वोल्टेज माइक्रोवोल्ट्स में है, आप प्रॉपरली एक सर्किट बनाते हैं. यू कैन मेक ए प्रॉपर सर्किट. ओके, उसमें RF एक अच्छे तरीके से सेट करते हो, R1 भी प्रॉपर वैल्यू लेते हो, ताकि आप उस कमज़ोर साइनोसाइड सिग्नल को एक प्रॉपर लेवल पे ले जाएं या अप्रोप्रिएट लेवल पे ले जाएं. दैट इज़ वेरी इजी फॉर अस इलेक्ट्रॉनिक पर्सन. तो हमारे पास कोई भी वीक सिग्नल हो, हम उसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ में इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे आप आउट ऑफ फेज चाहें उसको या इन फेज चाहें. हम उसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा सकते हैं या नॉन इन्वर्टिंग. देखिए, अगर हमारा इनपुट यहाँ बहुत कम भी हुआ, से फॉर एग्जांपल इट इज इन this is somewhere in volts. Okay, and now it is in millivolts, even in microvolts. Okay, let me assume now it is in 900 microvolt. Okay. Now, if I increase the gain of this circuit, अगर मैं इसका gain circuit का increase करूँगा, sufficient gain रखूँगा, we will be able to find that we are at least obtaining the output. ठीक है, output फिर भी हमें मिल रहा है, and that is quite higher. Input है हमारा blue, ये तो शायद notice भी नहीं हो रहा है. So input is not even noticeable. It is very difficult to see. It is so feeble. Even in microvolts, but output फिर भी हमें साइनोसाइडल मिल रहा है और वो भी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है. अब अगर दूसरा एम्पलीफायर नेक्स्ट स्टेज में रखेंगे, if we connect a second stage amplifier, then you can amplify it virtually to any level. आप किसी भी लेवल पे ले सकते हैं. ठीक है, तो आपकी सिग्नल जो है वो कितनी भी हो, maybe it is, this is now 9 millivolts. Millivolt is very small current. But still you can amplify those millivolts in a good magnitude of order of volts. देखिए, यहाँ 550 के लगाने से the signal has, or 850 या 950 के लगाने से signal has a quite good amplitude of nearly 8.4 volts. ठीक है, 8.4 volts. तो इनपुट सिग्नल है 9 मिलीवोल्ट, बहुत कम, और आउटपुट सिग्नल है 8.4 volt, or say for example it is 9 volt. Can somebody tell me how much will be the gain if output is 9 volts and input is 900 millivolt? Will be the gain? इसका गेन कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? सर मैक्सिमम गेन? हाँ नहीं, जो ये सर्किट है इस सर्किट में कितना गेन हो रहा है ऑब्टेन. सी हियर
द सिग्नल इज रफली 9 वोल्ट्स, इसकी जो पीक है या 8.4 वोल्ट्स है, ठीक है, या आप मान लीजिए 9 वोल्ट्स है, 9 वोल्ट्स, लेकिन इनपुट है 9 मिली वोल्ट। तो इसका गेन कितना है इस वक्त इस सर्किट का? व्हाट इज गेन इक्वल टू? गेन इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, 9 वोल्ट बाय 9 वोल्ट बाय 9 मिली वोल्ट, हाउ मच इज 10 आएगा फिर। कितना? 10 10 हाँ, it means 1000. So roughly by adjusting the values of these resistors, we can adjust the gain equal to 1000. ऐसा भी possible है. So it also means that if you have a signal, very weak signal, it is possible in electronics, you can amplify it 1000 times. You can increase its strength 1000 times. That is also possible. ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है अभी तक? किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं है? Should I stop now? मंजीत, कोई सवाल तो नहीं है बेटा? नो सर। What about Mehrajdeen is here? Mehrajdeen? Yes, sir. Mehrajdeen, कोई सवाल तो नहीं है बेटा, आपको समझ में आया? No, sir. No. Yes. अच्छा, आपको समझ ही नहीं आया? Schwab 45. इकरा जान, रोल नंबर 62. जी सर। ओके, तो जब आप इसको बनाएंगे, आप इसको इस चीज पर ध्यान रखें। जस्ट अ सेकंड। सर जब हमें ऐसे सर्किट्स बनाने होते हैं ना, जैसे